ठीक है जी. This hyperplane divides the space, the feature space, into two half spaces. So one half space is all the points x for which W transpose x is greater than or equal to theta, and other half space is right. So let's say this half space is h1 and this half space is a set of points h2, and we know that h1 union h2 would be equal to rd. पूरी स्पेस आ जाएगा, सॉरी इस थीटा यहाँ पे नॉट 0, right? Sorry. So hyperplane equation is W transpose x equal to theta. It divides half space into half spaces. And when you talk about logistic regression or perceptron classifier, and later when you talk about SVM, so all these classifiers, in all these classifiers, we are learning this hyperplane, that for a given data, what should be W and what should be theta. So logistic regression के अंदर भी ऐसी था, perceptron classifier के अंदर भी ऐसी है. And when we talk about hard SVM or linear SVM, support vector machine, we learn this linear boundary or linear hyperplane. This perceptron classifier works assuming कि आपके पास जो डेटा है, अगर बाइनरी क्लासीफायर है तो दो क्लासेस के अंदर है. एक में जिसमें W transpose x greater than or equal to theta है, एक क्लास hyperplane की एक साइड पे डेटा है, and data for other classes on the other side of the hyperplane or in another half space. ठीक है. So any questions about this understanding of hyperplane or half spaces? सर हमारे वेट्स नेगेटिव हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. अगर होगा तो क्या होगा? नेगेटिव, कुछ वेट्स नेगेटिव हो, कुछ पॉजिटिव हो, तो फिर क्या होगा? जी वेट्स कैन बी पॉजिटिव, वेट्स कैन बी नेगेटिव, उसमें तो कोई मसला नहीं है. वेट वेक्टर क्वांटिफाई, अच्छा वेट वेक्टर का इंटरप्रिटेशन क्या है? लेट सपोज वी आर इन R2, राइट. हम एज्यूम करते हैं दोनों वेट्स नेगेटिव हैं, राइट. व्हाट डज दैट मीन? कि आपका जो W है उसकी ओरिएंटेशन यहाँ इसके अंदर है, right? It means the hyperplane or the line separating or defining this W transpose theta would be this, something like this, and it has a normal W. अगर एक वेट पॉजिटिव है और एक वेट नेगेटिव है, let us suppose for x1 the weight is negative, for x2 the weight is positive, so your W would be here. It means the जो line separate करी classes को, उसकी orientation कुछ इस तरह की है. This would be W1 x1 plus W2 x2 is equal to theta. ठीक है जी. The weights can be negative. जो weight है, weight vector है, वो that's a normal to hyperplane. So W belongs to RD, and any point x for which W transpose x is equal to theta. So this point x के साथ जब भी आप लेंगे W का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट आएगा.
It means, can you take any point on this line? The inner product is constant. It means the point that lies on this line, or the line is perpendicular to the W, which is normal to the line. क्योंकि W नॉर्मल है इसलिए एंगल जो है वो इस लाइन का 90 डिग्री है. ठीक तो है. सर जो आपने बताया था कि अगर ऊपर वाली यानी पॉजिटिव होगा तो एंगल जो है लेस देन π/2 होगा और नेगेटिव में होगा तो एंगल ग्रेटर देन π/2 होगा. तो मतलब ये लेस देन π/2 कैसे वो 180 नहीं होगा, पाई नहीं होगा? Okay. I think it's a good question. Let me explain. Yeah. Okay. So we have data of two classes. Yeah, और फिर हमारे पास resume करते हैं कुछ circles. And so we have this line. It is linearly separable, and this line is W transpose X is equal to theta. What is W here? Normal, right? AW. Perpendicular to this green line. You take any point in this half space. कोई भी point ले लें. The angle with W would be less than or equal to π/2. ऐसी है ना? It is the angle between W and the point, right? Or is equal to the angle between the point and W, right? It's one and the same thing. क्योंकि angle जो है वो symmetric है, ठीक है? That's why since ऐसा होगा क्यों? क्योंकि line जो है W transpose X equal to theta है. Any point here would be W transpose. For any point here, W transpose X should be greater than or equal to theta. Similarly, जो भी आप पॉइंट यहाँ पे लेंगे नेगेटिव हाफ स्पेस के अंदर, any point you take, any point here, the angle with W would be greater than π/2. और ये मैक्सिमम 360 तक हो सकता है, सॉरी 270 तक. नहीं, मैक्सिमम 180 होगा ना, पाई होगा बेटा. वो कैसे होगा सर? उसको भी अगर काट के एक्सप्लेन करें. जी बिल्कुल. देखिए जो बिल्कुल एंटीपोडल पॉइंट होगा ना W के, राइट? Let's suppose I take a point on let me choose other color. Any point on this black line would form an angle 180 degree, right? अगर आप पॉइंट को यहाँ पे ले लेंगे, उसका एंगल लेस देन 180 है, अगर यहाँ पे भी ले लेंगे तो लेस देन 180 है. ठीक है? यानी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ ले सकते हैं. जी, angle is the difference between two vectors. थैंक यू सो मच. Okay. Any other questions about the understanding of hyperplanes, half spaces, and question chart में? No, Roshan, the angle between W and the black point. The angle is less than 180, right? Let's call this black point B1 and this call black point B2. So the angle between B2 and W is this. And the angle between W and B1 is this. So it's maximum, it can be 180 degree. Or if you go the maths, we have cosine of theta, which would be W transpose X divided by the norm of W and norm of X.
And since cosine inverse can be positive or negative, so maximum can be 180 degree. Okay, great. ठीक है जी. Any other questions? सर ये एंगल की स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्यों है, यानी आप कहते हैं लेस देन पाई बाय 2 और लेस देन पाई, जी यानी इक्वल इक्वल टू क्यों नहीं कहते? नहीं, it can be equal to pi. कम मैंने कहा है. ये स्लाइड्स में इस तरह लिखा हुआ है लेस देन. कहाँ पे जी? देखिए एंगल टू बी लेस देन पाई बाय 2. ओके, या पाई बाय 2 के इक्वालिटी का मतलब ये है कि वो प्लेन के ऊपर है बिल्कुल. ठीक है, because we want the classifier to divide the space into two half spaces. If there's a point on the plane, on the hyperplane, you your classifier won't be able to classify it in either class 1 or class 0, class 1 or class -1. Okay. Okay. Any questions about the perceptron algorithm? आप लोगों ने पढ़ा ही है? जी मैं लर्निंग वेट्स के ऊपर आ रहा हूँ. ठीक है, maybe we'll start with so let me explain this step by step once again. Let's suppose आपने start किया, एक idea कि आपने W learn करना है, and we also want you want to learn W, right? So we start with m is equal to 0, assuming कि कोई misclassification नहीं है. हम start assumption से करते हैं कि the W is aligned such that it is linearly separating the data, right? And then we will iterate over the data and we'll count the number of misclassifications. For every point in my data, we compute this W transpose Xi into Yi. और हमने Yi कहा था कि Yi can be 1 or Yi can be -1. If W transpose Xi is greater than or equal to 0, if W transpose Xi is less than or equal to 0. It means the product of Yi times W transpose Xi would be always greater than or equal to 0. ठीक है? अगर तो ऐसा नहीं है, it means the point Xi is on the wrong side of the hyperplane. And if that is the case, we say we have one misclassification and we update the weight. We update the weight in a way कि हम weight के अंदर add कर देते हैं simply Yixi. Yi can be 1, Yi can be -1, and Xi is the point जिसके वजह से misclassification आ रही है. अच्छा, ऐड करने से होगा क्या? तो हमने W को अपडेट कर दिया एक Xi के लिए. Let me explain. So we have one W, and for that W, and for given Xi, ये कंडीशन थी. It means ये Xi Y पॉइंट है, इसको हमारा क्लासिफायर मिसक्लासिफाई कर रहा है. If that is the case, we update the weight. So now, if we take
the inner product, again this one, with the updated weight, तो हमें क्या मिलेगा? Let me substitute this. yi w plus yi x I transpose xi plus yi xi transpose xi. Am I doing anything? Yeah. So yi w transpose xi, जो कि नेगेटिव था पहले वाला w, राइट, प्लस yi अगर 1 है या -1 है दोनों केस के अंदर ये पॉजिटिव होगा, राइट, और xi ट्रांसपोज xi ये पॉजिटिव है, राइट, एंड दिस वुड मेक श्योर कि दिस सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो जो वेट है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह अलाइन हो जाएगी कि फॉर दैट xi यू वोंट गेट द मिसक्लासिफिकेशन, and you keep on doing this for each point you encounter misclassification, and you keep on doing until unless m is equal to 0, क्योंकि जो ब्रेक लूप ब्रेक कर रहा है while वो तब ब्रेक करेगा जब m is equal to 0, when there is no misclassification or the hyperplane is exactly separating your data linearly. सर क्या आप एक ये स्टेटमेंट दोबारा क्लासिफिकेशन फॉर द यूजर पॉइंट, क्योंकि अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो हमारे पास -1 भी तो क्लासिफाई कर रहा होगा, तो वो तो क्लासिफिकेशन नहीं होगी. दोबारा बताइए, दोबारा पूछें. सही है, जो ये आपने स्टेटमेंट जो लिखी है yi of w transpose xi is less than equal to 0 इस क्लासिफिकेशन के, तो अगर वो क्या कहते हैं हमारे पास ट्रू लेवल -1 क्लासिफिकेशन तो नहीं होगी, राइट? वहाँ पे if w transpose xi is greater than equal to 0 or less than equal to 0. सर लेस देन इक्वल टू 0 लाइक -1 जो अगर होगा. जी, लेकिन हाँ अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है और देखना जो yi है, ठीक है, w ट्रांसपोज x लेस देन इक्वल टू 0 है और yi भी नेगेटिव है, वो मिसक्लासिफिकेशन नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. अगर w ट्रांसपोज xi लेस देन इक्वल टू 0 है और yi पॉजिटिव है तब प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, राइट. सो वी हैव प्रोडक्ट ऑफ yi and w ट्रांसपोज xi, ठीक है. अगर w ट्रांसपोज xi पॉजिटिव है और yi भी पॉजिटिव है, it means the point xi is on the right side, on the correct side of the hyperplane. एक सर समझ आ गया. ठीक है, there is no need to adjust w, right. अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, again the point is on the correct side of the is in the correct half space, we don't need to update w, so the product is again positive. The product negative हमेशा होगा ही तब जब मिसक्लासिफिकेशन होगी. ठीक है, मैं I would like to emphasize here again, यहाँ पे we have two terms, right? One is which is for sure less than equal to 0 और जो दूसरी टर्म है xi ट्रांसपोज xi है, ठीक है, which is the norm of the x. हमने आगे जाके प्रूव किया है कि this quantity is
greater than yi w transpose xi, and therefore जब w ऐड कर देते हैं इस पॉइंट के लिए you won't get misclassification. आइडिया सिंपली ये है कि अगर मैं इसको इंट्यूशन के टर्म्स में बताऊं, you have this w, right, and we have these 3 red points and these 4 blue points. Let's हम w कहीं और स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया कुछ maybe a plane like this, right? This green, and we have this w. जब आप इटरेशन रन की आपने, राइट, जब आपने इटरेशन रन की तो 2 पॉइंट्स के लिए मिस क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है. एक इस पॉइंट के लिए और एक, चलिए मैं उस वाले ग्रीन को डिलीट कर देता हूँ पहले. No, we can't. Image save किया हुआ. Anyways, so for these 2 points, we will have misclassification. You all agree with this, right? If we start with this W, तो मैंने green में draw किया है. So for this red and this blue point, we will have misclassification. Let's suppose when you're learning, you encounter the red point first. What's gonna happen? So W में ये वाला point add हो जाएगा, right? It means अगर पहले W ये था, W would be shifted to the right slightly. Agree? So after learning, say after update with the red point, W may turn out to something like this. कि ये plane है और W यहाँ पे आ गया. And next you encounter the blue point again, and again due to the blue point, you will encounter misclassification. Sorry, यहाँ पे नहीं था. assume करते हैं कुछ इस तरह adjust हुआ है कि blue point के लिए भी है और red के लिए खत्म हो गई. And when your algorithm encounters a blue point, W will be shifted slightly towards the right again, and finally it will be aligned with this W. So जो point तंग कर रहा है, जिसके वजह से misclassification हो रही है, आप उस point को W में add कर लें और W को shift कर दें, orient कर दें उस text की तरफ, ताकि at least उस point की वजह से misclassification ना हो. आसिफ, question? यस सर, ये x ट्रांसपोज x कहाँ से आता है? ये पीछे जो पीछे स्लाइड में था. जी जी, ओके, या जब हमने देखा ना इसको अपडेट किया ना, वेट को, मैंने वेट को रिप्लेस कर दिया W प्लस YI से. तो हमने यहाँ पे इस वाले W को अपडेटेड W से मैंने जब रिप्लेस किया तो आई विल गेट W ट्रांसपोज hang on, yeah, W transpose, yeah, right. दोनों में डबल जी जी जी, मैंने W को अपडेट किया W प्लस YXI से. सो W की जगह W भी आ गया और अगेन यू हैव XI ट्रांसपोज. चलिए मैं आपको, let me do it here. So we have W transpose XI और फिर मैं W मैंने अपडेट कर दिया. And now if I again evaluate this inner product with the updated W, so W plus YI into XI, you have this.
and you get W transpose XI into YI plus YI XI transpose X. और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, एंड लेटर वी शोड के हमने assumption इस तरह ली थी कि this is positive quantity है greater than equal to negative quantity है, and therefore after this update YI W transpose XI is greater than 0 after this update, and you do the same update for every XI. इतना थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि लेट्स स्टार्ट कि हमने एंड और इंप्लीमेंट किए थे। क्या हम एमपी न्यूरॉन से 3 इनपुट का एंड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड कैन वी कम अप विद वेट्स हेरिस्टिकली? हम कंप्यूट नहीं करेंगे वेट्स, सॉरी, कैन वी कम अप विद द वेट्स हेरिस्टिकली? maybe we can do it together, right? So let's say कि हमने 3 इनपुट का वो इंप्लीमेंट करना है और फंक्शन या एंड फंक्शन और नॉर फंक्शन यूजिंग एमपी न्यूरॉन। So we want to implement 3 inputs, say OR. जी एमपी न्यूरॉन से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जी? मॉडल क्या होगा? अगर हम परसेप्ट्रॉन से करते हैं फिर कैसे होगा मॉडल? सॉरी, सो 3 इनपुट और के लिए थीटा क्या होगा? और फंक्शन है, राइट? इवन इफ यू हैव 3 इनपुट्स, थीटा वुड स्टे 1। सर 1 होगा। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। So in fact, I would say कि anything theta can be anything greater than equal to greater than 0 and less than equal to 1. So you can choose any theta which is greater than 0 and less than equal to 1. That should work. ठीक है जी। Okay, let's implement NAND function. So assume करते हैं कि 2 dimensional हमने NAND function implement करना है, right? So we want to find के हम और let's say कि हम परसेप्ट्रॉन से करते हैं, फिर हम वेट्स निकाल देते हैं हेरिस्टिकली, जस्ट हेरिस्टिकली। Say 2 inputs NAND, and we're using perceptron. It means model looks like this. You have x1, x2, w1, w2. यहाँ पे we have aggregation, and we have this threshold theta. Maybe we also add a bias. और यहाँ पे हम threshold 0 कर देते हैं। Can you come up with W1, W2 and theta?
We want to implement NAND function. So the best way could be कि आप उसको plot कर लें, आप उसको plot करके देख लें. So NAND को हम plot कर सकते हैं. They have two inputs, x1, x2. और अगर दोनों binary हैं तो you will have these 4 points. इसमें कौन से पॉइंट्स के लिए लेबल 1 होगा और कौन से पॉइंट्स के लिए लेबल 0 होगा? We have NAND, right? So for all these 3 points, the label would be for this red point. Agree? So any line that separates these two classes, this could be this line, or this could have any orientation, like something like this, or all of these lines are potential candidates. So maybe you can just assume one value of theta, and you can find W1, W2. Okay, if I ask you कि आपने 3 input NOR function implement करना है, उसे कैसे करेंगे? So we want 3 input NOR. NOR का truth table क्या होगा? You get 0 when either of the inputs is 1, and you get 1 when all the inputs are 0. Right? So आपसे चाहेंगे कि origin के ऊपर जो है वो 1 आए, बाकी all the other points are 0. So you can fit a 3-dimensional hyperplane. A possible weights could be, say, theta is equal to -3, and if you choose weights, W1 is equal to W2 is equal to W3 is equal to 4. Hang on. 4 minus 3, yes, it should work. So if this is the case, so 4x1 plus 4x2 plus 4x3 minus 3 is equal to 0. So this would be the hyperplane for 3-dimensional NOR function. See, when any of x1, x2, x3 is equal to 1, or x1, x2, 1, yeah, तीनों 1 है. So for all these 3 possible cases, for all these 3 cases, 4x1 plus 4x2 plus 4x3 minus 3 would be greater than or equal to 0. Only when these 3 inputs are equal to 0, in that case, we have a point on the negative side of the half space or the hyperplane.
So okay, let me explain this. So we have 4x1 plus 4x2 plus 4x3 minus 3. So this will be greater than equal to, okay, this is the hyperplane. So we have x1, x2, and x3. So when this is, these three are 0. So 4x1 plus 4x2 plus 4x3 minus 3, this point would be on the negative side of hyperplane, right? And for all other cases 0, 0, 1 or 0, 1, 0 or जो भी case है, उस सब के लिए हमेशा this weighted sum would be positive. You can say that this function or this plane can separate or can implement the NOR function in three-dimensional space. Yeah. Any question about this? Roshan, give it. अस्सलाम सर सर आई एम कंफ्यूज जैसे कि हम बात कर रहे हैं फॉर नॉर तो 0 0 0 पे इट शुड बी 1 राइट Yeah, it should be 1. Yeah. तो फिर हम कह रहे हैं कि वहां पे हमारा नेगेटिव साइड ऑफ द हाइपरप्लेन है तो हाउ डज दैट मेक सेंस Oh, I'm just saying कि वो separate कर रहा है उन दो classes को. So ओके yeah, it is just separating the two classes. अगर आप चाहती हैं कि if you want कि उसके लिए positive आए और उसके लिए negative आए, then you simply multiply this plane with the negatives. ओके ओके ठीक है थैंक यू जी, वो सिर्फ हम एक plane कह रहे हैं जो plane separate कर रहा है, right? So one class is on one side of hyperplane and other class is on the other side of hyperplane, right? वो जो हमने उसको 1 और -1 जो लेबल्स लगाए हैं वो तो अपनी मर्जी से लगाए हुए हैं ना. So any class can be positive, any class can be negative. There's simply two sides of the hyperplane. यहाँ पे 0, 1 आ रहे हैं, but when we talked about the notation we used earlier, and there we had 1 and -1. ठीक है जी. Any other questions? Okay. If in a question at times there is no theta given, if there is no theta threshold is given, you assume के जो theta की value है वो 0 है. जैसे हमने इसमें भी किया ना कि हमने थीटा को एज एन इनपुट ले लिया. And for MP neuron, for perceptron, if threshold is not given, theta is taken as 0. क्योंकि थीटा को हमने इनपुट में एब्जॉर्ब कर लिया होता. Any other questions? Okay, so that's all from my side. For today's perceptron is covered. But if you have any feedback कि overall कैसे चल रहा है कोर्स, आप लोग क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं उस दिन ट्यूसडे को, and you or any suggestions from your side, any feedback? लोड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लोड बहुत कम है. Anyone?
सर अब लोड तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले ज़्यादा था। लेकिन जैसे आपने हमें असाइनमेंट्स में अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं, लाइक लास्ट असाइनमेंट में पर्टिकुलरली 1 वीक से ज़्यादा टाइम था। तो इस तरह से अगर बाकी असाइनमेंट्स में भी ऑलमोस्ट 10 डेज हो जाया करें तो थोड़ा इजी हो जाता है उसको मैनेज करना। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल, यू विल हैव plenty of time. Uh, yeah, you will have plenty of time, more than 10 days inshallah, for the next 2 assignments. सर फाइनल का कोर्स कहाँ से कहाँ तक आएगा? किसमें? फाइनल में सर शुरू से फाइनल लेके में? आखिर तक होगा या कुछ सिलेक्टेड होगा? नहीं जी, अलिफ तक ये होगा, सारा होगा। सर फाइनल 11th में कोई होगा? फाइनल 11 मई को स्केड्यूल हुआ हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही, और इन पर्सन होगा वो। वो तो बहुत टाइम पड़ा है, अराउंड। सर हमारा और कितना कोर्स रह गया है? वी विल कवर, हमने एसवीएम करना है, एसवीएम के बाद न्यूरल नेटवर्क्स करना है, दैट इज फॉर सुपरवाइज लर्निंग। देन वी विल के मीन्स क्लस्टरिंग और एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, जो कि अनसुपरवाइज टेक्निक्स होती हैं, कि अगर आपके पास लेबल पे साइन नहीं हुआ डेटा को, तो उसको फिर हम कैसे लर्न करते हैं, पैटर्न्स डेटा, हाउ कैन वी ग्रुप डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस, वो हम करेंगे। एंड देन आई वुड प्रेफर स्पेंडिंग 1 वीक ऑन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि डीप लर्निंग का टॉपिक है, लेकिन when we teach deep learning, so we start from CNNs. So there's a possibility कि आप में से कुछ बच्चे डीप लर्निंग ना लें, तो उनके लिए या इवन मशीन लर्निंग के लिए भी we use CNNs for feature extraction. Sorry. जी हम CNNs पे कंक्लूड करेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर मजीद होमवर्क होंगे या नहीं होंगे? जी मजीद होमवर्क होंगे, आज कल में रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह होमवर्क, लेकिन उस पर हम विल गिव ए चॉइस के हमने पॉल कनेक्ट करना है कि क्विज होमवर्क आप पर ड्यू करें या हम क्विज ले लें, लॉन्ग क्विज इन पर्सन। Because Avar was saying that this it's good to have a quiz so that you can practice for the final exam. आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइनल एग्जाम किस तरह का आएगा। So instead of homeworks, we can have one quiz. Instead of 2 homeworks, we can have 1 quiz. Any other questions, Ji? Let me stop recording.